After the budget receipts, the next topic is budget expenditure. There are two types of budget expenditure, revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure is that expenditure which does not create any asset and not reduce the liability of the government. Example, गवर्नमेंट जैसे लोगों को ओल्ड एज पेंशन देती है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, तो ऐसे एक्सपेंसेस करने से ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट होता है, और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरह की ग्रांट देती है नेचुरल क्लैमिटी को कवर करने के लिए, तो इससे ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस होती है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Capital expenditure is that expenditure which creates an asset for the government and reduce the liability of the government. सपोज गवर्नमेंट किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के शेयर्स परचेज करती है, इससे गवर्नमेंट के एसेट क्रिएट होते हैं, या गवर्नमेंट अपने लोन्स को रीपे करती है, इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस होती है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. There are further two type of expenditure, plan expenditure and non-plan expenditure. Plan expenditure is that expenditure which is according to specified plans and programs for development. And second is assistance of the central government to the state government. It means plan expenditure वो है जो specified, जो already plans होते हैं उसके according जो expenditure किया जाए, that is plan expenditure. और इसके अलावा कोई भी central government state government को help देती है या support देती है, that is also a plan of plan expenditure. Even non-plan expenditure is that expenditure. So all expenditure other than plan expenditure को छोड़ के जितने भी expenditure होंगे they are non-plan expenditure. Example, जो government expenditure करती है law, order, defense या लोगों को subsidies provide करती है, so that is a part of non-plan expenditure. So at last we can say that budget expenditure is equal to plan plus non-plan expenditure, or budget expenditure is equal to revenue expenditure plus capital expenditure. Now next topic is budget deficit. We all know that deficit means loss, and obviously loss is incurred at that time when expenditure is more than income. So budget deficit refers to that situation where budget expenditure of government is more than budget receipts. So budget deficit formula is equal to budget expenditure minus budget receipts. It has further three types. Now we will talk about types of budget deficit. The first type is fiscal deficit. Second type is revenue deficit, and third type is primary deficit. Now first is revenue deficit. Here we are talking about only revenue. So here revenue expenditure is more than revenue receipts, so that is called revenue deficit. So revenue deficit is the difference between revenue expenditure and revenue receipts. Second one is fiscal deficit. Fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipts other than borrowings. We know that there are two type of expenditure, revenue expenditure plus capital expenditure, and receipts also has two types, revenue receipts and capital receipts other than borrowings. So fiscal deficit is the difference between total expenditure and total receipts other than borrowings. Why we are not considering borrowings in deficit? Because फिजिकल डेफिसिट को कवर करने के लिए जो भी पैसा टेक ओवर करती है गवर्नमेंट, दैट इज बोरिंग. सो दैट्स वाई बोरिंग्स फिजिकल डेफिसिट का पार्ट नहीं है. सो फिजिकल डेफिसिट फॉर्मूला इज ओनली टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स. एंड लास्ट इज प्राइमरी डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट में से जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी, ये इंटरेस्ट पे करेगी गवर्नमेंट उन बोरिंग्स के ऊपर जो बोरिंग्स गवर्नमेंट ने टेक ओवर की, क्या कवर करने के लिए, फिजिकल डेफिसिट. सो प्राइमरी डेफिसिट फॉर्मूला इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बजट डेफिसिट इज द difference between budget expenditure and budget receipts. There are three types of budget deficit. The first is revenue deficit. Revenue deficit is the difference between revenue expenditure and revenue receipts. Fiscal deficit is the difference between
total expenditure and total receipts but other than borrowings, because borrowings हम क्यों करते हैं, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट मार्केट से पैसा बोरो करती है, इसलिए बोरिंग्स को फिजिकल डेफिसिट के बीच में कवर नहीं किया जाता. सो फॉर्मूला इज ओनली टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स. एंड सो इन करेक्ट वी कैन से दैट फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग्स, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है. सो बोरिंग्स हमेशा किसके इक्वल होंगी, फिजिकल डेफिसिट के. एट लास्ट प्राइमरी डेफिसिट, बिकॉज हमने मार्केट से पैसा बोरो किया, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे. सो फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करके जो भी हमारे पास डिफरेंस आएगा दैट बिकम्स प्राइमरी डेफिसिट. द गवर्नमेंट चैप्टर हैज फिनिश्ड.